English grammar class, and today I am with chapter number 20, that is use of apostrophe S. The name of the chapter is use of apostrophe S. Okay. So I am on page number 115, and now I will read out some sentences from this yellow box on page number 115. See what is happening in the picture. There is a girl playing, okay, and one more little girl is there, and the picture is saying that this teddy bear belongs to Pooja. They are playing and there is a teddy bear kept beside them. उनके बगल में एक टेडी बेयर रखा हुआ है and that teddy bear belongs to पूजा. पूजा का टेडी बेयर है, ठीक है. The dress that belongs to नीतू is red. जो ड्रेस नीतू की है वो रेड है, नीतू की ड्रेस. The doll that belongs to Anu has red hair. अनु की जो डॉल है उसके बाल रेड है. अनु की डॉल, नीतू का ड्रेस, पूजा का टेडी बेयर. Here the short phrases that I have taken, Anu की डॉल, keyword is there, पूजा का टेडी बेयर, का word is there, and one more, नीतू की ड्रेस, keyword is there. So this का, के, की is telling us about the belongingness or the ownership. belongingness और ownership का मतलब होता है कि कोई चीज किसकी है. ओके, जैसे हम कहते हैं ना, उसका घर, रमन का घर, रिया का स्कूल, बच्चों का घर, बच्चों के खिलौने. लाइकवाइज दिस का, के और की वर्ड जो हिंदी का होता है वो बिलोंगिंगनेस और या ओनरशिप शो करता है कि किसका है. सो दिस किसका है वी आर गोइंग टू लर्न इन इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 20, एंड दैट इज use of apostrophe S. Use of apostrophe S. And see how we are going to learn this apostrophe S. Like I have said, Anu, yes, Anu ki doll. Anu ki doll. That means यहाँ अनु और apostrophe S अगर हम मिला देंगे तो वो जो हिंदी का वर्ड हमने यूज किया अनु की, दिस विल बी द सेम. जो मैंने बोला अनु की, दैट मीन्स अनु अपॉस्ट्रोफ एस मीन्स अनु की. पूजा का, पूजा अपॉस्ट्रोफ एस, दिस मीन्स पूजा का. नीतू का, नीतू apostrophe S, Neetu's. So it is Anu's, Anu ka, Pooja's, Pooja ka, Neetu's, Neetu ka. So this is the use of apostrophe S. How do we use it in English? And it shows the ownership. It shows the ownership. Okay, now we will do the next part of the chapter. Now as I have given you the introduction to apostrophe S, ये कि apostrophe S का use कहाँ होता है. Okay, now further I will explain it from page number 115 only. This pencil belongs to Rashmi. ये pencil Rashmi की है. So this can be said as this is Rashmi's pencil. Ritu has curly hair. Ritu के बाल curly है. Ritu's hair is curly. Okay. So for using
apostrophe s we need two words. पहला जो ओनर है एंड द सेकेंड जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में हम फिर से जाते हैं. अनुज है, अनु का बाल. टू वर्ड्स है, पहला ओनर, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स उसका बिलोंग, जो भी उनकी उसकी बिलोंगिंग्स है, जो भी उसकी चीज है. अनुज है, पूजा's टेडी बेयर, पूजा का टेडी बेयर. नेक्स्ट इज नीतू's dress. So here we have seen that we need two words for using apostrophe s. The first one is the owner and the second one is the object that belong to the owner. So likewise it is given, my mother has a beautiful necklace. यानी कि मेरी मम्मी के पास एक सुंदर सा नेकलेस है. मम्मी नेकलेस. नेकलेस किसका है? मम्मी का. मम्मी का नेकलेस, दैट इज मदर्स नेकलेस. The song that the nightingales sing is sweet. जो सॉन्ग नाइटिंगेल गाती है वो स्वीट है. क्या गाती है? सॉन्ग. और कौन गाता है? नाइटिंगेल. दैट मीन्स वो सॉन्ग किसका हुआ? नाइटिंगेल का. सो द नाइटिंगेल्स सॉन्ग. Okay, now here we are here on page number 116 and we will do the exercises based on apostrophe s. Now the very first exercise is from page number 116 and this exercise is very easy. This is encircle the words that shows belonging. One has been done for you. Now there are 8 sentences and 8 sentences show the belongingness. So you have to just encircle the apostrophe s words. Like number 1 is Aditya's car got stolen. Aditya की कार चोरी हो गई. So Aditya की, that is Aditya's. So you need to encircle it. I'm just passing it orally. Okay. After that, the next exercise I will do on the board. Number 2, Shan's pencil box is red. Shan की pencil box red है. Shan की, the word will be Shan's. This is my mother's bangle stand. ये मेरी मम्मी का चूड़ी का स्टैंड है. किसका? मम्मी का. Mummies और mothers. The father's watch is costly. पिताजी की घड़ी महंगी है. किसकी घड़ी? पिताजी की घड़ी. That means fathers. My fathers. Fathers. Now number 5 is Ravi's pen is lying on the desk. रवि का पेन डेस्क पे पड़ा है. किसका पेन? रवि का. Ravi's. Number 6, my aunt's sari is made of silk. मेरी आंट की साड़ी सिल्क से बनी है. किसकी साड़ी? आंट की साड़ी. That is aunt's. Number 7, Bobby's eyes are blue. बॉबी की eyes blue है. किसकी eyes blue है? बॉबी की. That is Bobby's. Now the last one is number 8, Nishant's kitten is walking on the wall. निशांत की किटन वॉल पर चल रही है. किसकी किटन? निशांत की. That is Nishant's. Now here this exercise, the first exercise ends up. Now we are here A exercise, page number 116, and here what you need to do on page number 116 exercise A, you have been given some phrases 1 to 10 and we have to show belonging using apostrophe s. apostrophe s लगा के हमको belonging show करना है. नाम भी और उसका ऑब्जेक्ट भी. Okay, now 1, 2, 3, 4 I will write first. See here, the bicycle of my cousin.
The bicycle of my cousin. मेरे cousin की bicycle. मेरे cousin की bicycle. That means we have to use apostrophe s and we have to show the belonging also. My cousins. cousin लिखने के बाद apostrophe s. bicycle. by B-I-C-Y-C-L-E. Bicycle. Number 2 is the parrot which belongs to Lippy. वो पैरट जो लिपी का है. किसका है? लिपी का है. So लिपी is a name. L-I-P-I. Okay. लिपी. Then apostrophe s. That means लिपी का. Lippy's parrot. Next, number 3, the neck of the giraffe. The neck of the giraffe. जिराफ की गर्दन. किसकी गर्दन? जिराफ की गर्दन. The giraffe's neck. G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. Then apostrophe s. Giraffe's neck. N-E-C-K. Neck. Now next is number 4, the frock that belongs to the girl. वो फ्रॉक जो लड़की का है. किसका फ्रॉक? लड़की का फ्रॉक. The girl's frock. The girl's frock. G-I-R-L apostrophe S. Girls. G-I-R-L apostrophe S. Girls. Okay. Now number 5. Now number 5 is the trunk of the elephant. Number 5 is the trunk of the elephant. That means the elephant's trunk. The E-L-E-P-H-A-N-T apostrophe S. Elephant's trunk. हाथी की सूंड. Number 6. The eraser that belongs to Keshav. Keshav का eraser. Keshav's eraser. K-E-S-H-A-V apostrophe S. Keshav's eraser. Number 7. The father of Raghav. The father of Raghav. Raghav के पापा. किसके पापा? Raghav's father. R-A-G-H-A-V apostrophe S. Raghav's father. Number 8. Number 8. The dog that is owned by Kanika. The dog that is owned by. Owned by का मतलब होता है जिसकी कनिका स्वामी है. स्वामी मतलब उसका है. किसका डॉग? कनिका का डॉग. कनिका's dog. K-A-N-I-K-A. Kanika's dog. Number 9. Number 9 is the tail of the kitten. The tail of the kitten. Kitten की पूंछ. The tail of the kitten. Kitten की पूंछ. That means the kitten's tail. The kitten's tail. The kitten's tail. Now number 10, the last one, the piano that belongs to Priya. Piano जो प्रिया का है. Number 10. Priya's piano. P-R-I-Y-A. Priya's piano.
Piano. Priya's piano. Okay? Whose piano? Priya's piano. Now, next exercise we will do. Now, the next exercise is very simple exercise from page number 117. Fill in the blanks. Exercise B. Fill in the blanks. Use apostrophe S with the words given in the bracket. The words are given in the bracket and you have to just put apostrophe to them only. Okay. Now there are 10 sentences, number 1 to 10. I'm just writing out the answers only. So this is dash guitar. This is Peter's guitar because Peter is written in the bracket. Peter apostrophe S. Number 2, my dash son lives in Beijing. मेरे अंकल का son बीजिंग में रहता है. Uncles. UNCLE then apostrophe S. Number 3, do you have Samir's number? क्या आपके पास समीर का नंबर है? Samir's SAMEER apostrophe S. Next, dash sister is a gymnast. आशा की sister एक gymnast है. Asha's sister. Asha apostrophe S. Now next is number 5. I am reading dash poems. मैं टैगोर की poems पढ़ रहा हूँ. Tagore's. TAGORE apostrophe S. TAGORE apostrophe S. Tagore's. Now number 6 is dash hair is brown. Dash hair is brown. And bracket में name दिया हुआ है Kate. That means Kate के बाल brown hair. Kate's hair is brown. KATE Kate apostrophe S. Kate's hair is brown. Number 7. Today is my dash birthday. Bracket में है sister. That means sister का birthday. आज मेरी बहन का जन्मदिन है. Sister's birthday. Today is my sister's birthday. Next is our dash office is very big. हमारे और ब्रैकेट में नाम है प्रिंसिपल. हमारे प्रिंसिपल का ऑफिस बहुत बड़ा है. किसका ऑफिस? प्रिंसिपल का ऑफिस. Our principals. PRINCIPAL apostrophe S. Principal's office is very big. Our principal's office is very big. Number 9 is my dad's sari is red in color. Bracket में है mother. That means mother की साड़ी. मेरी मम्मी की साड़ी red है. That means my mother's sari is red in color. Now next is dash brothers topped his class. Topped का मतलब होता है class में top करना. Top. Okay. Dash brother topped in class. Neeta's brother topped in class. नीता के भाई ने class में top किया. NITA Neeta apostrophe S. So students, we have done here 2 exercises of chapter 20, that is use of apostrophe S, and here I am ending my class. 2 more exercises are left that we can do in our live classes. Okay, so that's all for today. Have a nice day, class 2. Bye bye.